ओके ताले आज आम आरंभ करबा कॉनिक सेक्शन पार्ट 3 जोटा कि आमे पढिबा हाइपरबोला। हाइपरबोला is a locus of a point which moves in a plane so that the ratio of its distance from a fixed point, which is also known as focus, जोटा आमे आगे पढ़थिले कि फोकस का को कहंती है ना, is a fixed line called directrix is constant and which is greater than 1। देखो आमे पढ़थिले eccentricity का फार्मूला। eccentricity कौन थिला? गोटे पॉइंट रु फोकस, गोटे रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स लाइन इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला रे एसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। यदि 1 आउ 0 भितर अछि त सेटा हबो एलिप्स हैला। आउ जदि इक्वल टू 1 अछि त सेटा हबो पैराबोला। आ जदि इक्वल टू 0 अछि त सेटा हबो सर्कल। एटा हमें प्रीवियस क्लासेस रे पढि दैछु। एबे एटरे सेया दिया अछि कि hyperbola रो eccentricity will be greater than 1 हैला। ताल डेफिनेशन यदि हमको पचारिबो एग्जाम रे ताले हमें कोन कहबो? हाइपरबोला रो डेफिनेशन होची which has eccentricity greater than 1 and the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant which is greater than 1 हैला, is known as hyperbola हैला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म जेमति हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़थिले सेमति इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी था। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कोन? x square by a square minus y square by b square equal to 1 where a and b are constant हैला। a and b कोन? b होची गोटे कांस्टेंट, a भी होची गोटे कांस्टेंट। ए तळे हमें देखि परबा कि हाइपरबोला डायग्राम केमति थाए। देखो डायरेक्ट्रिक्स एठी ए हाइपरबोला पे ए डायरेक्ट्रिक्स, ए हाइपरबोला पे ए डायरेक्ट्रिक्स हैला। देन दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस हैला और एटा कॉन्जुगेट एक्सिस हैला। ए पार्टटा होची रेक्टम, एटा होची लैटिस रेक्टम हैला। लैटिस रेक्टम, दिस इज आल्सो लैटिस रेक्टम। देन दिस इज पीएस और पीएम माने गोटे फिक्स पॉइंट रो डायरेक्ट्रिक्स लाइन आउ फोकस लाइन हैला। द रेशियो इज इक्वल टू एतिकी बुझा पड़लो। चल आगो किछि टर्म्स अछि हाइपरबोला रिलेटेड जोटा हमको मन रखिया को पड़िबो, जोटा हमको बुझियार अछि। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री। सिमेट्री सब जानछ, गोटे लाइन गोटे प्लेन गोटे पॉइंट रु सिमेट्रिक अलग अलग जिंस हेबे। Since only even powers of x and y occur in the above equation, so the curve is symmetric about both the axes. माने x axis रो भी एटा सिमेट्रिक रहबो, y axis रो भी सिमेट्रिक रहबो। नेक्स्ट फोकाई। फोकाई माने फोकस रो प्लूरल होची फोकाई। माने गोटे हमर एठी s गोटे फोकस, s डैश आ गोटे फोकस हैला। दीटा फोकस था हाइपरबोला रे जेमति कि हमर एलिप्स रे भी दीटा फोकस था हैला। and their coordinates are a e comma 0 and minus a e comma 0. Then the distance between focus is given by 2 a e. A distance a through a distance होची 2 a e हैला। डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एट्रे कोन दिया छी? zm। zm is the directrix, it be z dash m dash directrix। Directrix zm and zm dash are the two directrices of the hyperbola and their equations are x is equals to a by e and x is equals to minus a by e। ए यार इक्वेशन होची x is equals to minus a by e, यार इक्वेशन होची x is equals to a by e हैला। एबे हमें आसिलु distance between the two directrices is given by 2a upon e। माने ए दुटा डायरेक्ट्रिसेस भितर जो डिस्टेंस रहबो जोटा कि ए लाइन रो देखो देखा एटा हबो 2a by e हैला। नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट हमें जिबा एक्सिस। व्हाट इज एन एक्सिस? एक्सिस होची दीटा एक्सिस होची, गोटे ट्रांसफर एक्सिस और गोटे कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कोन? ट्रांसवर्स एक्सिस होची जोटा हॉरिजॉन्टल अछि, ट्रांसवर्स ताको कट करूची, ट्रांसवर्स कट करूची।
आ कॉन्जुगेट एक्सिस होची जोटा टाको सिमेट्रिक इति डिवाइड करछि याको फोल्ड करले सेटा ता ऊपर सुपर इंपोज हैला ताले the lines A dash and B dash are called the transverse axis and the conjugate axis respectively of the hyperbola. The length of transverse axis A dash is 2A and the length of conjugate axis is B dash which is equal to 2B. A and B are constants. Center. The point of intersection C of the axis of hyperbola is called the center of the hyperbola. Center कौन 8. जो एक्सिस आम ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो जगह इंटरसेक्ट करछंती सही जगह को हमें सेंटर बोली करी हैला एटा बाइसेक्ट भी होचे बाइसेक्ट होचे माने कि ए ऊपर लेंथ होची बी ए तळे लेंथ होची बी सेमिति ही ट्रांसफर्स एक्सिस भी बाइसेक्ट अब ताले सी रो लेफ्ट हैंड साइड जोटा रहइबो सी रो लेफ्ट हैंड साइड ए लाइन टा यार लेंथ होची ए सी रो राइट हैंड साइड जो लाइन टा तार लेंथ होची ए हैला नेक्स्ट अब जो vertices point A which is a comma 0 and point A dash which is minus a comma 0 where the curve meets the line joining the focus S or where the curve meets the transverse axis एटी देखो transverse axis रे curve meet करछि एटी A एटी meet करछि A dash हैला this is also known as the vertices of the hyperbola है ना এটা কত vertices of hyperbola only next जब हम focal chord a chord of the hyperbola passing through its focus is called a focal chord एमती को भी हमें गोटे chord बनेलु जोटा पास करछि hyperbola रो focus सेटा focal chord normal chord तो normal chord हैला next focal distance of a point the distance of the focal distances of any point on the hyperbola is constant and equal to the length of the transverse axis of the hyperbola. If P is a hyperbola, then P is a hyperbola, then S dash P minus SP will be equal to 2A, which is also equal to the length of transverse axis. Focal distance for the focus with a different distance. Always will be equal to 2A. Lattice rectum. L dash and N dash are the lattice rectum. N dash and L dash are the lattice of the hyperbola. And these lines are perpendicular to the transverse axis A dash passing through focus. माने lattice rectum हमें कोई perpendicular line passing through the focus perpendicular to the transverse axis which pass through the focus है ना passing through the focus S and S dash respectively ताले L रो पॉइंट कोन हबो A E एटा हमको माने रखे को पड़ियो एटा हमको माने रखे पड़ियो कि this is important formula eta how a eta ताले lattice rectum theta lattice rectum था हैला theta lattice rectum कोठी कोठी तार पॉइंट मार्क करे गोटे हाइपरबोला ऊपर से तार दिस इज द गिवन एटा एटा सब दिस इज द गिवन फार्मूला जोटा को हमको इक्वेशन में बाहर करिया को पड़ियो लेंथ ऑफ द lattice rectum व्हाट इज द लेंथ ऑफ द lattice rectum लेंथ ऑफ द lattice rectum एटी दिया है L dash is equals to 2b square by a is also equal to n dash important हमको माने रखिया हो हला नेक्स्ट हमें आसिलु इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी जोटा हम आगर करथिलु e बाहर करथिलु पैराबोला रे e is equal to 1 हला एलिप्स रे e is 0 to 1 हाइपरबोला रे greater than 1 हला ताले व्हाट इज e रो गोटे इक्वेशन रहइबो जोटा कि हमें एटा डिराइव करके सब बाहर करके e रो इक्वेशन एडी बारला
एटा को हमको मन रखिया करबे लेकिन हाइपरबोला क्वेश्चन में मेनली से पचार दिए e रो वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ताले जेति की हमें मार्क कर ए दिटा दीज आर ऑल इंपोर्टेंट एटा को हमको मन रखिया अछि हला नेक्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला रो भी गोटे पैरामेट्रिक इक्वेशन अछि जोटा कि हमें पैराबोला रे देखथिलु हला जोटा कि हमें एलिप्स रे देखथिलु सेमिति ही हाइपरबोला रो भी गोटे पैरामेट्रिक इक्वेशन अछि since coordinate x is equals to a sec theta and y is equals to b tan theta satisfy this equation माने पैराबोला हाइपरबोला रो इक्वेशन ए दुटा पॉइंट satisfy करूछि for the real values of theta therefore x is equals to a sec theta and y is equals to b tan theta are the parabolic equation parametric equation of hyperbola माने x जगह रे हमें पकाइबु a sec theta और y जगह रे b tan theta आले पकाइले जो x और y अछि सेटा गोटे पैरामीटर गोटे वेरिएबल रे पळा आसीबो से गोटे वेरिएबल रे आसला ताले हमर इक्वेशन गुडा को इजी अछि बुझ पारला से काय यूज करंती पैरामीट्रिक इक्वेशन ओके सो जो थीटा रो वैल्यू अछि सेटा ऑलवेज 0 to 2 pi भितर रहे hence the coordinate of any point on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 may be taken as a sec theta comma a b tan theta है this point is also known as the point theta the angle theta is known as eccentric angle of the point theta which is on the hyperbola माने जब हमें एलिप्स रे बाहर करथिले सेमती हमें से पॉइंट रू जोटा थीटा एंगल बाहर कर परबा जोटा कि एसेंट्रिक एंगल भले आबे जानि इक्वेशन ऑफ अ chord रो गोटे इक्वेशन अछि फॉर एग्जांपल द इक्वेशन ऑफ अ chord joining the point p and q p रो दिया अछि a sec theta 1 b tan theta 1 q रो दिया अछि a sec theta 2 b tan theta 2 is x by a हला यदि chord से पचाला ताले हमें ए इक्वेशन टा मन रखथिबा नले मेनली डिटरमिनेंट यदि मन रखदब इजी हे देखो x y a 1 then x रो फर्स्ट वैल्यू y रो फर्स्ट वैल्यू 1 x रो सेकंड वैल्यू y रो सेकंड वैल्यू 1 एटा मन रखे गले ताको एक्सपैंड करले हमर ए सेकंड पार्ट टा बार ओके नेक्स्ट conjugate of hyperbola whose transverse and conjugate axes are respectively the conjugate and transverse of the given hyperbola are called as conjugate hyperbola जबकि हमें गोटे एलिप्स रे पढ़ितले हॉरिजॉन्टल एलिप्स वर्टिकल एलिप्स सेमती एटे भी जो वर्टिकल हाइपरबोला को हमें conjugate of the horizontal hyperbola को the conjugate hyperbola of the hyperbola x square by a square minus y square by b square is x square by a square minus y square by b square सेम रहेला इक्वल टू -1 है ना और minus x square by a square plus y square by b square equal to 1 है ना this is how we'll find the conjugate of hyperbola कार भी conjugate बाहर कर ले just multiplied by minus है ना next find the eccentricity of the hyperbola 16x square minus 32x minus 3y square plus 2y equal to 44 ताले आम पाखरे कोन अछि गोटे काम करबा 8 रे x और y कॉमन नै छिबा गोटे x गोटे y विल टेक कॉमन और we can take 16 common also 16 एटा देखो कॉमन ने गला 16 x square minus 2x 3 कॉमन ने गला y square minus 4y equal to 44 ଏବେ କଣ କଲା डिवाइड कर देला एग्जैक्टली डिवाइड कला बाय 16 and 16 multiplied by 3 रो डिवाइड कर देला हला कर देला ताले ଏବେ कोन आबो ଏବେ आबो x square x minus 1 रो होल स्क्वायर by 3 minus y minus 2 रो होल स्क्वायर by 16 equal to 1
তাহলে ଏବେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ଆମେ ବାହାର କରୁ E eccentricity is equals to under root of 1 plus B by A, which is B by A. B by A. B is 4, A is root 3, which is also equal to 16 by root 3. Hala, 16 by 3. Add कलर आसला 19 by 3. This is the matter. लेती बाहर तुमको गोटे इक्वेशन दिया थी तुमको ताको स्टैंडर्ड फॉर्म को आनिबार अछि मैनिपुलेशन करिकी तापर स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग विथ एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, को जगह कट करूची ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ। नेक्स्ट हमें आसिले कंडीशन फॉर टैंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टैंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जति हमें सेटे पढिथिले कि टैंजेंट रो केतेटा थिला पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामीटर। सेम एट्रे भी पॉइंट, स्लोप, पैरामीटर। नॉर्मल रे भी पॉइंट, स्लोप और पैरामीटर। So condition for tangency and point of contact. The condition for the line mx plus c equal to y to be a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is that এটা হচ্ছে তার condition. This is the condition which is c square, sorry, which is c square, highlighting up, c square equal to a square m square minus b square, है ना? And the coordinates of the contact point are given as this. Coordinate कितने बार करबो, जस्ट लाइन और हाइपरबोला इक्वेशन इक्वेट कर देना, हमको कोऑर्डिनेट बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आसीबा शो दैट द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equals to p touches the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to if a square cos square alpha minus b square sin square alpha is equals to b square। ହେଲା ଏବେ କଣ କଲା एठू हमें y is equals to x plus c हमें बाहर कर y is equals to x cot alpha plus b cosec alpha। Comparing this we get m is equals to minus cot alpha and c is equals to p cosec alpha। वे c पकेलो, c रो स्क्वायर करलो, c square is equals to a square m square minus b square। पकेलो ताले वाला p square cosec square alpha is equals to a square cot square alpha minus b square और p square is equals to a square cos square minus जोटा कि हमें इटू बाहर कर इट से देइतला condition, just we prove that condition is true and the line is a tangent to the hyperbola। next हमें दिया point form में जितने हमें करथिलु point form में कौन करथिलु point form में जो point दिया है कि ताको गोटे को x स्क्वायर थिला ताले गोटे को x जगह रे पकेलु, y स्क्वायर थिला वो y जगह रे पके हला ताले point form में कोन आबो tangent the hyperbola is passing through the point on the hyperbola which is x1 comma y1, then equation of tangent will be x1 by a square minus y1 by b square equal to 1, है ना, equal to 1. Note, the equation of tangent at x1 comma y1 can also be obtained by replacing x square by x1, y square by y1 and x by देखो जोड़ा हमें आगुरु पढ़ी आसलो जस्ट तारो शॉर्टकट केमती मने रखे तो x plus x1 by 2 y by xy plus y1 by 2 and xy by xy1 plus x1y by 2
This method is used only when the equation of the hyperbola is polynomial to the second degree in x and y. है ना? पैरामेट्रिक फॉर्म में कर दिला, पैरामीटर को पुट करियो, पैरामीटर एटा ए केस रे कर दिला a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, जस्ट सेट पुट कर दियो, समझ में? ताले x by a sec थीटा minus y by b tan theta is equals to 1. Slope form of tangent, slope form of tangent रे कोन slope form रे आमे जेमते करथलु ताले आमे गोटे slope बाहर कर, slope form of tangent is equals to y is equals to mx plus minus c जगह खाली जो hyperbola रे छी सेटा पके a square m square minus b square the coordinates of contact same रहइबो, हैला? This will be equal to this will be equal to ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ମନେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆରଟା ବି ମନେ ରଖିପାରିବା, ହେଲା? ସୋ ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଖତମ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା नॉर्मल को, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर फाइबर। देखो पॉइंट फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म दीटा फॉर्म अछि, एटा आ गोटे फॉर्म भी अछि जोटा कि मारा स्लोप फॉर्म, स्लोप हमें जानचो काहेकि टेंजेंट आ हमारा नॉर्मल आर परपेंडिकुलर तो स्लोप m1 m2 is -1 आसीबो, जस्ट तार -1 by m हमें point form this equation of the normal at x1 comma y1 to the rectangular hyperbola x1 minus y1 is equals to x1 the whole square minus y1 the whole square. Hello. Parametric form. The equation of normal at ct comma c by t to the rectangular hyperbola xy is equals to c square is xt the whole cube minus yt minus ct the whole raised to power 4. Sorry, ct t c multiplied by t raised to power 4 plus c is equals to c. Hello. Then the equation of normal at ct comma c by t is the 4-degree equation in t. Hello. So in general, 4 normals can be drawn from a point of hello. Next, asymptotes of hyperbola. The lines x square by a square minus y square by b square is equal to 0. That is, it is the general standard equation of hyperbola. That is, y is equals to plus minus bx by a are called asymptotes of the hyperbola. Asymptotes hyperbola कौन करना? जो line गुणा which is equal to y is equal to bx by a are known as asymptotes of the hyperbola. The curve comes close to these lines as x tends to infinity and x tends to minus infinity, but never meets them. In other words, asymptote is to a curve touches the curve at infinity. देखो ये होची hyperbola, ये बड़ी बड़ी जाउची, तो गोटे लाइन आसीबो at infinity. This is infinity, which is at lines at x tends to infinity and x tends to minus infinity. है एटा जो एसिम्प्टोट्स अछि एटा ए लाइन गोटे एसिम्प्टोट हला एटी गोटे लाइन रहबो आ एटी जो हाइपरबोला अछि हमरा एती एटा जाईकी देती इन्फिनिटी रे मीट कर, दिस इज इन्फिनिटी जो एटा मीट कला, यस सेमिति ही एई पार्टटा हाइपरबोला जो अछि से या से तो माइनस इन्फिनिटी रे मीट करिवो, माइनस हला से लाइन को कहती यार वैल्यू होची, यार वैल्यू दिया है y is equal to plus minus bx by a. Hello. Next, note the angle between asymptote of x square by a square, which is hyperbola, standard hyperbola, x square by a square minus y square by b square is equal to 1 is
2 tan inverse b by এটা হচ্ছে তার जिससे पता चला angle between asymptotes मैंने आपको बेटा लिखा है b without a as a constant so पहले को खत्म how answer mark a hyperbola as is and its conjugate hyperbola have same asymptote মানে যদি তার conjugate भी बाहर करिबो তাহলে same asymptotes right the asymptotes pass through the center of the hyperbola hyperbola रो center रो asymptotes pass करत है ना the bisector of the angle between asymptotes are the coordinate axis coordinate axis asymptote को bisect करत equal the product of the perpendicular from any point of the hyperbola x is equals to x square by a square minus y square by b square is equals to 1 to its asymptote is constant equal to a square b square by a square plus b square. Any line drawn parallel to the asymptote of the hyperbola would meet the curve only at 1. बुझ पालो यानी कोई भी line which is parallel to the asymptotes of the hyperbola would meet the curve only at 1. ଗୋଟେ point ରେ ହିଁ meet करे ବୁଝିଲ asymptotes of properties these are all properties of asymptote है ना these are all properties of it. Next time I see rectangular hyperbola. If the asymptotes of the standard hyperbola are perpendicular to each other, then it is known as a rectangular hyperbola. यदि asymptotes standard hyperbola ର ଦିଟା asymptotes है ସେମାନେ perpendicular ଅଛନ୍ତି which is angle between asymptotes which is 2 tan inverse b by a should be if it is equal to pi by 2 therefore b should be equal to a if b is equals to a is equals to a then hyperbola is mostly rectangular hyperbola. Hello. So this is given b is equals to a or x square minus y square is equals to a square or x square minus y square is equals to b square is the general form of equation of a rectangular hyperbola. If we take the coordinate axis along the asymptotes of a rectangular hyperbola, then the equation of the rectangular hyperbola becomes xy is equals to c square, where c is any constant. Important. Hello. The parametric form of the equation of rectangular hyperbola is y is equals to ct, y is equals to c by t, where t is the parameter. Hello. ଯେମିତି ଆମେ ସେଟା କରିଥିଲୁ a theta, b tan theta ସେମିତି यार parametric equation ଏଟା. The properties of rectangular hyperbola. Y square minus x square minus y square is equals to t square is a rectangular hyperbola. So the equation of asymptotes of a rectangular hyperbola are y is equals to plus minus x square. Hello. Next, plus minus x. Sorry, no x square. Y is equals to plus minus x. Next, the transverse and conjugate axis of a rectangular hyperbola are equal in length. Transverse axis ର length କଣ ଥିଲା 2a ଆଉ conjugate axis ର length ଥିଲା 2b. ଯଦି a equal to b ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମ transverse ଆଉ conjugate axis ବି ତ same ହେଇଗଲେ ଦିଟାର length କଣ ହେଲା 2a କି 2b. Then eccentricity of very important below question is equal to under root 2. Under root 2 is greater than 1 is equal to 1.41. Okay. So these are some properties of rectangular hyperbola. Next question. Find the eccentricity of the conic represented by x square minus y square minus 4xy plus 4 minus 4x plus 4y plus 16 equal to 0. এটা কোন আছে x square আছে 4x and x minus
x minus 4 गोटे नहीं जीवा y minus 4y गोटे नहीं y square minus 4y 16 गोटे नहीं. So this will be equal to x minus 2 the whole square plus minus y minus 2 the whole square, which will be equal to 16 है ना. So कहीं ना जो y और x रो जो 4 plus 4 minus 4 ଥିଲା तो 0 ହେଇଯିବ 16. Okay, so we'll get x minus 2 the whole square by 4 square minus y minus 2 the whole square by 4 square equal to 1. जब एठरे देखो a is equal to b ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ବି ଯାଇ ପାରିବା. ଆମେ ସିଧା ଯଦି आपको ଏସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି ମନେ ଅଛି ହାଇପରବୋଲାର ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ √2 ଅଛି. लेकिन a is equals to b ଅଛି ଆମେ डायरेक्ट कहि परिबा कि this is a rectangular but क्वेश्चन में देछि shifting the origin at 2, 2 we obtain x square by 4 minus y square by 4 equal to minus 1 when x is equals to x plus 2 and y is equals to minus 1. The rectangular this is a rectangular hyperbola whose eccentricity is always under √2. यदि हम एटा पकाइके भी देखिबा ताले √2 आसे है ना. ताले एटा हमर सरला hyperbola. What is hyperbola? What are the standard equations of hyperbola? Some important terms related to hyperbola, and then what is like lattice rectum, what is eccentricity, को जिनसे हमको लर्न करवाना चाहिए सब जिनसा है ना. डायरेक्ट्रिक्स कौन होता है, एक्सिस, सेंटर, वर्टिसेस, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कौन कौन सा होता है से सब हमें देख लो. नेक्स्ट हमें जब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपर. पैरामेट्रिक इक्वेशन में कौन था पैरामीटर थीटा में बाहर कर दो a sec थीटा और y is equals to b sin थीटा है ना. नेक्स्ट क्वाड्र इक्वेशन में यदि थीटा पॉइंट क्वाड हमको जॉइन करिवार अछि ताले किछि ना डिटरमिनेंट बनबा x y और 1 ता तळे x1 y1 1 x2 y2 1 जेटा कि पैरामीटर थी है ना. दैट कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला ताले कि जस्ट यदि हॉरिजॉन्टल में अछि ट्रांसवर्स से कॉन्जुगेट लाइन रे पड़ा से बस सरला. नेक्स्ट एक क्वेश्चन में देखि तले एक्सेंट्रिसिटी बाहर करिवार अछि. Then tangential condition which is c square is equals to a square x square minus b square. এটা fulfill হচ্ছে তাহলে the line is tangent to the hyperbola है ना. Next अब मैं देखले point form parametric और slope form then normal पढ़िले asymptotes कौन थे सेटा पढ़ले और तार टोटल छोटा प्रॉपर्टीज देखले. प्रॉपर्टीज गुड़ाको हमको मने रखिया पड़िबो ताहले asymptotes क्वेश्चन इजीली पढ़. यहाँ पे देख लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन था जो a इक्वल टू b था. a इक्वल टू b अछि एसेंट्रिसिटी पे √2 है ना. और तार स्टैंडर्ड इक्वेशन होची स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x minus x square minus y square is equals to t square है ना. देन हमें इस गोटे क्वेश्चन कर लू रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाउ आजिर ठीक सर. सो आजिर क्लास एटी सरला हमें कोनिक सेक्शन पूरा सारी देले. नेक्स्ट हमें पढ़िबा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जोड़ा के 6 नु आरो. ओके पीपल, थैंक यू वेरी मच. आओ प्रैक्टिस करो था, रिवाइज करो था. ओके.